एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है डेक्कन स्कूल के सब स्कूल्स। तो अगर हम इसके सब स्कूल्स की बात करें तो इसका जो फर्स्ट सब स्कूल है इट्स नेम इज़ अहमदनगर। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द अहमदनगर पेंटिंग आर कंटेन्ड इन अ वॉल्यूम ऑफ पोइम रिटन इन प्रेज ऑफ हुसैन निज़ाम शाह वन ऑफ अहमदनगर इन 1553 टू 1565 एंड हिज क्वीन। तो जो फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट थी अहमदनगर के अंडर वो किसकी प्रेज में लिखी गई थी? हुसैन निज़ाम शाह वन की प्रेज में और उसकी क्वीन की प्रेज में लिखी गई थी। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट नोन एज द तारीफ इन हुसैन शाही। इस मैन्यूस्क्रिप्ट को तारीफ इन हुसैन शाही के नाम से जाना जाता है। असाइन टू अ पीरियड ऑफ 1565 टू 69 इज प्रिजर्व्ड इन द भारत इतिहास समोधका मंडाला पूना। One of the illustration depicts the king sitting on the throne and attended by a number of women. एक जो दूसरी इलस्ट्रेशन है उसमें किंग को थ्रोन पे बैठे हुए दिखाया गया है अपने अटेंडेंट्स के साथ, वुमेन अटेंडेंट्स के साथ। द फीमेल अपियरिंग इन द पेंटिंग बिलोंग्स टू द नॉर्दर्न ट्रेडिशन ऑफ मालवा, जो कि नॉर्दर्न मालवा ट्रेडिशन के साथ शो की गई हैं। द चोली एंड लॉन्ग पिगटेल ब्रेडेड एंड एंडिंग इन अ थ्रेड, हैंगिंग थ्रेड आर द नॉर्दर्न कॉस्ट्यूम। इन लेडीज को नॉर्दर्न कॉस्ट्यूम्स के साथ पेंटिंग में शो किया गया, बट द लॉन्ग स्कार्फ पासिंग राउंड द बॉडी इज इन द साउदर्न फैशन। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि नॉर्दर्न एंड साउदर्न ट्रेडिशन के साथ लेडीज को शो किया गया था। द कलर्स यूज इन द पेंटिंग बीइंग रिच एंड ब्रिलियंट, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि रिच एंड ब्रिलियंट कलर्स का यहाँ पे यूज किया गया था, आर डिफरेंटली फ्रॉम दोज यूज इन द नॉर्दर्न पेंटिंग। द पर्शियन इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन द हाई हॉरिजन, golden sky and the landscape. Some other fine example of the Ahmednagar painting are the Hindol Rag of about 5090 AD, the portrait of Bura Nizam Shah II of Ahmednagar and of Malik Ambar of about 1605 AD, existing in the National Museum New Delhi and other museum. Or you can write Ragini Patham Shikha also, because Ragini Patham Shikha is from Ahmednagar School. This painting, miniature painting of Ahmednagar sub school, is composed vertically and almost in symmetrical manner. Watercolor in tempera technique are used. Thin and forceful lines rendered. Necessary textural effect are given. On the top of the composition, some inscriptions are done in Devanagari script. So the whole composition is well composed and well balanced. Its next sub-school is Golconda. The earliest painting identified as Golconda work are a group of 5 charming paintings of about 1590 AD in the British Museum, London, painted in the period of Muhammad Quli Qutb Shah. Golconda. They show dancing girls entertaining the company. One of the miniature illustrated show the king in his court watching a dance performance, जिसमें से कि एक illustration में king को show किया गया जो कि dance performance को watch कर रहा है। He wears the white muslin coat, जिसको कि white शेरवानी में दिखाया गया है with embroidered vertical band, a typical costume associated with the Golconda court, typical costume के साथ गोल्डन कलर यूज किया गया बहुत ही लेविशली। ठीक है, पेंटिंग में, आर्किटेक्चर में, कॉस्ट्यूम में, ज्वेलरी, वेसल्स एटसेट्रा, इन सब चीज़ों में गोल्डन कलर का बहुत अच्छे से यूज किया गया। अदर आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ द गोलकुंडा पेंटिंग आर लेडी विद द माइना बर्ड। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस गोलकुंडा स्कूल। फाइन, painted in near about 1605 AD in the Chester Beatty Library, Dublin, and illustrated manuscript of a Sufi poem, जिसमें कि सूफी पोइम को इलस्ट्रेट किया गया था, इन द ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, एंड अ कपल ऑफ पोर्ट्रेट शोइंग अ पोइट इन अ गार्डन एंड एलिगेंटली ड्रेस्ड यंग मैन सिटेड ऑन अ गोल्डन स्टूल एंड रीडिंग अ बुक, बोथ साइंड बाय अ सर्टन आर्टिस्ट मोहम्मद अली इन द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, बॉस्टन. You can write Chand Bibi playing polo painting also. The painting belongs to Golconda sub-school and the medium used in this painting is tempera watercolor on paper. The subject matter of this painting is the entertainment of Chand Bibi and her companions. And for their entertainment, they have chosen the game polo and the title is according to it. Fine. So you can write about its color scheme, about its feature. Chand Bibi and her 3 companions are sitting. Eyes of the ladies are big and open while waist is triangular in shape. One lady is standing on the foreground with her hands directing upwards. She is perhaps an attendant. A white ball is also shown. A silvery grey lotus lake with aquatic birds has been shown in the foreground and the horizon is recited. In the foreground, huts, rocks, trees, etc. are shown. Green, yellow, blue and brown colors are used. Being a miniature painting, it seems if it is a big size painting.
In the blue sky, sun is also shown. So overall, it is a well balanced and beautiful painting. This painting is liked by everyone. Clear, students? Now I'm going to tell you about Deccan's third sub-school. Its name is Hyderabad. Painting in Hyderabad started with the foundation of Asaf-Zahi dynasty by Mir Kamruddin Khan. Nizam-ul-Mulk in 1724 AD. Influence of Mughal style of painting on the already exist early style of Deccan painting, introduced by several Mughal painters who migrated to the Deccan during the period of Aurangzeb and sought patronage there, was responsible for the development of various style of painting in Deccan at Hyderabad and other centers. ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, due to Aurangzeb. Fine. Distinctive feature of the Deccani painting of the 18th and 19th centuries are observed in the treatment of the ethnic type, costume, jewelry, flora, fauna, landscape and colors. Picture showing a princess in the company of maids in a garden in the collection of National Museum is a typical example of the Hyderabad school of painting. The princess is reclining on richly furnished terrace covered with a canopy. In the background are seen trees and a pool of water with aquatic birds. The style of painting is decorative. Typical characteristics of the Hyderabad painting like the flower beds. This is the main feature of Hyderabad painting. Rich colors of Deccani facial type and costume can be observed in the miniature. It belongs to the third quarter of the 18th century. So students, these were the sub-schools of Deccan School of Miniature Painting. These are the main sub-school like Ahmednagar, Golconda and हैदराबाद. अब इसमें आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो पेंटिंग के बारे में भी ऐड कर सकते हैं. फाइन. Through the famous Deccani miniature painting Hazrat Nizamuddin Aulia and Amir Khusro, we receive a spiritual message as in this painting. Hazrat Nizamuddin Aulia is shown sitting on an orange platform along with his favorite companion as well as his favorite disciple Amir Khusro, who was a Sufi poet from Delhi. Both are discussing on some religious subject. In foreground, Amir Khusro is sitting on the left side while Hazrat Nizamuddin Aulia is sitting on the right side. Amir Khusro is holding a musical instrument. Hazrat Nizamuddin is shown wearing olive green colored dress, which is typical dress of a Sufi saint. Amir Khusro is wearing red turban and red dress, so the whole atmosphere of this painting is religious and the subject matter depicts the devotion of a devotee, Amir Khusro, towards his god, Hazrat Nizamuddin. Fine. Now I am going to tell you about Bijapur. In Bijapur, painting was patronized by Ali Adil Shah I and his successor Ibrahim II in 1580 to 1627 AD. An encyclopedia known as Nizam-ul-Mulk, preserved in the Chester Beatty Library, Dublin, was illustrated in 1570 AD. किसके टाइम में? अली आदिल शाह वन के टाइम में. और इस मैन्युस्क्रिप्ट्स में कितनी मिनिएचर पेंटिंग्स थी? 876. सो दिस मैन्युस्क्रिप्ट कंटेन 876 miniatures. The ladies appearing in the illustrations are tall and slender, are the wearing the South Indian dress. This is the main feature of Deccan School of Art. Fine. इसमें जो लेडीज हैं उसको लंबा और पतला दिखाया गया था. कौन सी ड्रेस के साथ? साउथ इंडियन ड्रेस के साथ. One of the miniature illustrated here shows the throne of prosperity. This is influence of the Lipakshi mural painting on the female depiction of the rich color scheme. The palm trees, animals, men and women all belong to the Deccan tradition. The profuse use of golden colors, some flowering plants and arabesques on the top of the throne are derived from the Persian tradition. इन सब चीज़ों को Persian tradition के साथ show किया गया था. Now next sub school is Tanjore. अब इसके जो मेन फीचर थे यहाँ पे बोल्ड ड्राइंग, टेक्निक ऑफ शेडिंग और प्योर एंड ब्रिलियंट कलर्स का यूज़ किया गया था. अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ तंजोर पेंटिंग इन द कलेक्शन ऑफ द नेशनल म्यूजियम is an illustrated wooden panel of early 19th century showing the coronation of Ram. अब इसमें श्री रामचंद्र जी के सीन को दिखाया गया था. द मिडल राम एंड सीता आर सीटेड ऑन द थ्रोन. श्री रामचंद्र जी और सीता जी को सेंटर में बैठे हुए दिखाया गया था थ्रोन पे, अटेंडेड बाय हिज ब्रदर एंड अ लेडी. In the left and right panel are seen rishis, courtiers and princes. In the foreground are Hanuman, Sugriv who are being honored. Two other Vanas opening a box probably containing gifts. तो इस तरह से इस सीन को डिपिक्ट किया गया था. The style is decorative and is marked by use of bright colors and ornamental details. The conical
crown appearing in the miniature is a typical feature of the Tanjore painting. Clear, students? I hope you understood well. If you have any doubts, then ask in the comment section. Till then, take care and bye.